Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel। इस वीडियो में हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 कर रहे हैं। कुछ टर्म्स हैं जैसे कि कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, सिंगुलर इंटीग्रल या एसआई, जनरल सॉल्यूशन और जनरल इंटीग्रल। तो हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो मान लीजिए हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का मतलब है या इंटीग्रल ऑब्टेन करने का मतलब है कि हम एक रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। और ये रिलेशन जो है, इसे अगर हम इसका डेरिवेटिव लें एंड जो वेरिएबल्स हैं इनकी हेल्प से जो गिवन इक्वेशन है, गिवन PDE है दिस वन, वो अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या इंटीग्रल है। कंप्लीट इंटीग्रल फर्स्ट पॉइंट। कंप्लीट इंटीग्रल का क्या मतलब है? मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है फाई एक्स वाई जेड एंड ए बी, जहाँ की ए बी जो हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं एंड एक्स एंड वाई जेड, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं। सो जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो मान लीजिए हम इसे इक्वेशन 1 मार्क करते हैं और इक्वेशन 1 को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x and y respectively। तो जो हमें दो इक्वेशंस ऑब्टेन होती हैं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करें, प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड, क्योंकि जेड भी एक्स का फंक्शन है, सो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ये पी के इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू पी इज इक्वल टू 0। सेकेंड हम कर सकते हैं एंड डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन 2 कहलाएंगी, कंबाइंड दिस वन एंड दिस वन। और जैसे कि ए एंड बी दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशन 1, these two arbitrary constants, that is a b, these connected by, these two are connected by equation 1 and 2 and these can be eliminated, a and b can be eliminated। और अगर हम इन्हें एलिमिनेट कर दें तो हमारा जो फंक्शन है वो अब दूसरे तरह का हो जाएगा। ये फाई एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू 0 था, ये एलिमिनेट करने के बाद हम कहते हैं दिस गिव्स एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये ऑब्टेन हुआ हमें एक्सप्रेशन, दिस इज 3। और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन 3 इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। और मान लीजिए ऐसा होता है कि हम इक्वेशन 1 को डिराइव करते हैं इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 1 हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इक्वेशन 3। दिस इज, वी आर सपोजिंग, सपोज कोई भी मेथड लगा के हमने ये इक्वेशन ऑब्टेन कर ली, देन इंटीग्रल 1 जिसमें कि उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं जितने कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंटीग्रल 1 विच हैज as many arbitrary constants
constants as there are independent variables. तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा. इस केस में इक्वेशन 1 इज कंप्लीट इंटीग्रल. तो अगर हम यहाँ पर देखें x और y ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो z है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. सो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ टू ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. इसका मतलब ये इक्वेशन 1 जो है कंप्लीट इंटीग्रल है इक्वेशन 3 का. नाउ वी कम टू पर्टिकुलर इंटीग्रल. पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 3 जो कि है एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, जो कि यहाँ पर दो कांस्टेंट्स हैं ए एंड बी, इनको हम पर्टिकुलर वैल्यू दे दें. सो ए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 3 is obtained by giving particular values to a and b in equation 1. तो हमें वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा विच इज कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 क्या है, which is complete integral of equation 3. Now singular integral या singular solution. Singular solution और singular integral. तो यहाँ हम एक पॉइंट है, नया पॉइंट है. कोई भी सिस्टम है वो सिस्टम डबली इनफाइनाइट कहलाता है. तो डबली इनफाइनाइट सिस्टम, तो कोई सिस्टम डबली इनफाइनाइट सिस्टम कब कहलाता है, जब देयर आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. डबली मीन्स टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स A and B, and each of these can take infinite number of values. तो डबली, क्योंकि दो हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो डबली इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है. तो इनफाइनाइट, तो यहाँ पर जो हम इस बात कर रहे हैं इस पॉइंट की डबली, वी नो दैट द लोकस ऑफ all the points whose coordinates along with the locus of all the points whose coordinates along with the values of P and Q satisfy equation 3. ये जो है रिप्रेजेंट करेगा डबली इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ सरफेसेस गिवन बाय 1. रिप्रेजेंट the doubly infinite system of surfaces given by 1. So ये दो पॉइंट हुए फर्स्ट एंड सेकंड. अगर हम अब एनवलप लें ऑल द सरफेसेस गिवन बाय 1 का, तो उसका जो सिचुएशन होगा वो होगा सिंस
the envelope of all the surfaces given by 1, तो इस एनवलप का हर एक पॉइंट जो है टच किया जाता है, इनमें से किसी सरफेस द्वारा टच होता है। एनवलप पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स p और q की वैल्यू उस पॉइंट के साथ इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द एनवलप इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन होगा। सो हम कह सकते हैं सिंस एनवलप ऑफ ऑल द सरफेसेस गिवन बाय 1, इक्वेशन 1 इज टच्ड एट each of its points by someone of these surfaces. The coordinates of any point on the envelope along with the values of p and q belonging to the envelope at that point must also satisfy equation 3. Hence we conclude is a solution of equation 3. And how to get this envelope? That is the envelope of the surfaces given by 2 is obtained by eliminating a and b between the equations. Is obtained by eliminating a and b between the equations. सो इस तरह से हम एनवेलप ऑब्टेन कर लेते हैं। We eliminate a and b between the equations phi x y z pq is equal to 0 and del phi upon del a is equal to 0 and del phi upon del b is equal to 0. And we obtain a relation between x, y and z. X, y and z, and this relation is called singular integral. Singular integral. In general, this singular integral is distinct or different from
complete integral, but in exceptional cases it may be contained in the complete integral. In that case, when it is contained in a complete integral, singular integral may be obtained by given particular value to complete integral. Value to constants of complete integral. We give value to constant. When we try to find out singular integral, other relations may also appear in the process of getting singular integral. So what we do, it is necessary to test that the equation of singular integral satisfies the given differential equation. And how we will check that? We will use that variables and their derivatives, and we will put in that equation. If it satisfies, means that solution is singular integral, otherwise not. Now general integral or general solution. Now we assume that equation 1, that is phi x y z a b is equal to 0. We have this equation and we assume that there are two constants a and b, and one of them is a function of the other. Means one is the function of the other, means we can say b is equal to fa or a is equal to fb, any one of them. Then function, this equation 1 becomes phi x y z and a fa is equal to 0. Now this equation, let's say a of surfaces given by the system 1. And as earlier said, that the equation of the envelope of the family of surfaces given by this equation A must also satisfy equation 3, and that is fxyz pq is equal to 0. So equation of the envelope of the family of surfaces given by 5 given by A must also satisfy equation 3, which is fxyz pq is equal to 0. And again we say that again the equation so obtained will be distinct from that of the envelope of surfaces, and it is not a particular integral. It is known as the general integral and is obtained by eliminating a between the equations phi x y z a f a and del phi upon del a is equal to 0. So this is general integral. The equation so obtained, this equation of envelope, this is general integral or general solution. Again here also the same situation may arise, that other relations may appear in the process of getting
the singular integral, and then it is necessary to test that the equation of general integral satisfies the given differential equation. So we have to check. Here one point, important note: while solving a non-linear equation, we must not only obtain the complete integral but should also find the singular and general integrals. In absence of details of singular and general integrals, merely the complete integral or complete solution is considered to be incomplete solution of the given partial differential equation. However, if in the question it is said that find complete integral, then only find complete integral, need not to find the general or singular integrals. And if it is written find singular integral and general integral, do according to the question, whatever is being said in the question. Now geometrical interpretation of three types of integrals of fx, y, z, pq. So geometrical interpretation of three types of integrals of fx, y, z, pq is equal to 0. First is complete integral. Complete integral, its relation between x, y and z. This represents and since it involves two constants, two arbitrary constants or parameters, we can say, it belongs to double infinite system of surfaces. Or to a single infinite system of family of surfaces. So double infinite system of surfaces or single infinite system of family of surfaces. Then general integral or general solution. Here we have the equation is phi x y z a b is equal to 0. This is equation 1 which we have taken, and it is complete solution of the equation f x y z pq is equal to 0 obtained by eliminating between
equation 1 and the equations b is equal to psi a and del phi upon del a plus del phi upon del b into psi dash a is equal to 0, where psi is an arbitrary function. What does it mean? The operation of elimination is equivalent to selecting from the system of families of surfaces a representative family and finding the envelope. So what we do? Select what does elimination means? Elimination means, or how we do it, or how to do it. Select a representative and representative family from the system of families of surfaces and find the envelope. Now equations, we have this one, and let's mark this 2 and 3. This is 3. So equations 1, 2 and 3 together represent a curve drawn on the surface of the family whose parameter is a, whereas the equation obtained by eliminating a between them is envelope of the family. These together represent a curve drawn on the surface of the family whose parameter is a, whereas the equation obtained by eliminating a between them is the envelope of the family. It follows that envelope touches the surface represented by 1 and 2 along the curve represented by 1, 2 and 3, and this curve is known as characteristic of the envelope, and the general integral thus represents the envelope of a family of surfaces considered as
composed of its characteristic. So it follows that envelope touches the surface represented by 1 and 2 along the curve represented by 1, 2 and 3. This curve is known as characteristic of the envelope, and the general integral thus represents the envelope of a family of surfaces considered as composed of its characteristics. Then see singular integral. The singular integral is obtained by eliminating a and b between equation 1 equations 1 del phi upon del a is equal to 0 and del phi upon del b is equal to 0. So 1 and let's say this is 4 and 5. The operation of elimination is equivalent to finding the envelope of all the surfaces included in the complete integral one, 4 and 5. Give the point of contact of the particular surfaces, point of contact of the particular surfaces represented by equation 1 with the general envelope.
It follows that the singular integral represents the general envelope of all surfaces included in the complete integral. It follows that the singular integral represents the general envelope of all surfaces included in the complete integral. अब हम देखेंगे कि सिंगुलर इंटीग्रल डायरेक्टली अगर हम में ऑब्टेन करना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का तो कैसे करते हैं उसके मेथड एंड कंपैटिबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस एंड पर्टिकुलर केस ऑफ कंपैटिबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस और फिर कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर बेस्ड करें. देन स्पेशल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन चारपिट मेथड से करेंगे एंड देन देयर आर सम स्पेशल मेथड्स. चारपिट मेथड जनरल मेथड है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. देन स्पेशल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस एप्लीकेबल टू सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर्म्स. तो स्टैंडर्ड 1 है फॉर्म, देन स्टैंडर्ड 2 जो क्लेरॉट इक्वेशंस कहलाती हैं, देन स्टैंडर्ड 3 एंड देन स्टैंडर्ड 4. उसके बाद जैकोबी मेथड पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है. देन वी विल सी जैकोबीज मेथड फॉर सॉल्विंग non-linear first order partial differential equation in two independent variables, and then Cauchy's method of characteristics for solving non-linear partial differential equations. Then this chapter will be over and then we will be doing next chapter based on homogeneous linear partial differential equations with constant coefficients. So right now तो अभी हम करते हैं मेथड ऑफ गेटिंग सिंगुलर इंटीग्रल डायरेक्टली फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ये जो फर्स्ट पोर्शन हम कर रहे हैं जिसमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल्स एंड ये मेथड जो अभी करने जा रहे हैं एंड कंपैटिबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इन पर जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन चारपिट मेथड से एंड देन स्पेशल केसेस पर बेस्ड हैं. जैकोबी मेथड, कॉशीज मेथड उन पर बेस्ड हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना ज़रूरी है, इसीलिए इसे डिटेल में किया गया है. टू अंडरस्टैंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड देयर सॉल्यूशंस. सो हम मानते हैं कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये हम लेट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं. दिस इज एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 एंड जिसका कि कंप्लीट इंटीग्रल
whose complete integral is of the form phi xyz ab is equal to 0. So this is equation 1, this is 2, and ab arbitrary constants हैं, and singular integral of equation 1 is obtained by eliminating a and b between equations del phi upon del a is equal to 0 and del phi upon del b is equal to 0, and equation 2, between equations these and equation 2. The values of z, p, q which we are deriving from equation 2, derived from 2 from the complete integral, derived from complete integral from equation 2, that is complete integral. When we substitute it in 1, substituted in equation 1, what will happen? It should satisfy, and when satisfy होता है तो identity में reduce हो जाता है, will reduce it into an identity and the substitution of values of p and q but not of z will in general render one equivalent to integral equation. So will reduce to an identity, and the substitution of the values of p and q but not of z will in general give equation 1 equivalent to the integral equation. Now what we do substitution. By using this substitution, p and q are replaced by functions of x, y, z, a and b in equation 1, and it follows that the singular integral is given by 1 and the equations obtained on differentiating 1 partially with respect to a and b, namely the equations, you will get the equations, and that shows that there exists a functional relation between p and q which does not contain a and b explicitly. So we will get one functional relation. Then we will see next step. First we write the equations by using this substitution. P and Q are replaced by functions of x, y, z and functions of x, y, z and a and b in
in equation 1, it follows that the singular integral is given by 1 and the equations obtained on differentiating one partially with respect to A and B, namely the equations del F upon del P, del P upon del A plus del F upon del Q into del Q upon del A is equal to 0. So if we mark these equations, these two equations as equation 3, this is 3 and 4, and this is 5, and another is del F upon del P. This is with respect to A, this is with respect to B. Del P upon del B plus del F upon del Q and del Q upon del B is equal to 0. This is equation 6. If del F upon del P and del F upon del Q, they are not equal to 0. If del F upon del P is not equal to 0 and del F upon del Q is not equal to 0 and 5 and 6 holds, then we can say then 5 and 6 hold if del P upon del A into del Q upon del B minus del P upon del B into del Q over del A is equal to 0. We are applying Crowd's method, cross multiplication. Del F upon del P and then del P upon del A into del Q upon del B minus del Q over del A and del P over del B. So we can do like solving these two equations, showing that there exists a functional relation between
P and Q not contain A and B explicitly. Let this functional relation be psi PQ is equal to 0, and we mark it 7. If both the constants A, B occur in P and Q, which does not always happen. P and Q, which does not happen always. Does not always happen. Then 7 shows that one of them is, equation 7 shows that one of them is a function of the other. And the equations using them give general integral, which is not now required. Not now required. Equation 5 and 6 are also true if del P upon del F upon del P is equal to 0. We mark it 8, and del F upon del Q is equal to 0, 9. Elimination of P and Q. From 1, 7 and 8 will give a relation between x, y and z, x, y, z free from A and B, and if this relation satisfies the differential equation 1, it must be singular integral, because if it is not satisfying, many other relations may arise, then it is not singular integral. So checking is necessary. Now next we do compatible system of first order equations.